Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. I hope सबको मेरी आवाज clearly आ रही है. I hope you all can hear me clearly. Sir, आज please PNB का बता देना. Definitely, yes, we can hear you. Thank you. Thanks for the confirmation. You will start the session in next minute or so. आज 900 रुपए का लॉस है, प्लीज देखो. डेफिनेटली वी विल ट्राई टू रिकवर. आई वांट टू बाय ओला इलेक्ट्रिक. कल लॉस करा दिया सर. जी राजी, कल लॉस हुआ, उससे पहले काफी प्रॉफिट भी हुआ है. आई कैन डेफिनेटली से दिस. डिस्कस ओनली अबाउट इंडेक्स एंड नॉट स्टॉक. मधु जी, सी अगर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है या फिर वी आर नॉट एबल टू गेट अ गुड एंट्री पॉइंट, देन इट्स बेटर टू डिस्कस स्टॉक्स. दैट इज व्हाट वी अज्यूम, एंड इट हेल्प्स यू नो मैनेज अ पोर्टफोलियो एंड एंश्योर कि वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे. Very insightful session. Good noon, Mr. Stockholmo. 3 lakh loss for the first time. Morning. Good momentum is very insightful. We will start the session, guys. We will start the session. आज कितना ट्रेड्स मिलेगा विजर्ड जी? दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्ट एंड द अपॉर्चुनिटी. Let me just check in with the expert once to ensure that there is no issue in joining. Okay, Legon sir is here. Let me add to the stage. Thanks a lot, Parminder ji, for your support, and we hope ki you have made a good profit over time. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Hi, sir. After a long time, after 2 months of profit. Yes, Umesh ji, we will definitely try. Good evening. Doing a great job. Thanks, Jyotika ji. Thanks a lot. Yes, sir. We can see your screen. Start the session officially. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal, and you see me daily managing these sessions and hosting these sessions, being the bridge between your questions and the expert, trying to solve as many queries as possible. We have 2 sessions every day. The morning session is at 9:30 a.m. Around stocks, equity, and where we share intraday and swing trades. जो हमारा afternoon session होता है, वो जनरली होता है अराउंड आवर डेरिवेटिव्स, बेसिकली एक्सपायरी. जैसे कि आज ट्यूसडे है, आज FINNifty है, तो FINNifty एक्सपायरी के अराउंड हम करने वाले हैं. एवरी डे वी हैव अ डिफरेंट एक्सपर्ट. टुडे वी हैव निकुंज सर, वी कांट सी यू एंड हियर यू. निकुंज सर इज आवर एक्सपर्ट, जिनको आप पहले मॉर्निंग सेशंस में देखते थे, बट from last month he has started joining us in the afternoon session as well. So yes sir, we can see you, we can hear you. Okay, over to you. You can share your screen. Your screen is already shared. And we can start with the indices update and then strikes on the radar. Okay. Okay. So we're good to go. So yes, good afternoon, everyone. Welcome to another week of FINNifty expiry, and good afternoon to you too, Anuj. So start करते हैं again निफ्टी से. निफ्टी ने आज strong start किया है, और for a change it has managed to hold its gain.
सो नीचे के लो से हम देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन, इफ यू कैन सी इफ इट इज विजिबल, 24,100 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के लास्ट 3 दिन में अच्छी रिकवरी रैली देखी गई है, वेरिन एक गैप अप हुआ था और वहां से स्ट्रॉन्ग मूव आया है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट फिल्ड द गैप डाउन, वन ऑफ द 2 गैप्स विच आर ओपन, जो 5 अगस्त का गैप डाउन है वो हमने फिल कर दिया है आज। तो 24,700 है, तो जब तक अभी 24,450 के ऊपर है तब तक बाय एंड डिक्लाइन स्टैंड्स शुड कंटिन्यू इन निफ्टी, एंड स्लोली बट स्टेडीली इट शुड रिक्लेम the previous high levels, which are 24,900 and northwards of 25,000. So Nifty comparatively has been resilient and has been strongest. Mainly last few sessions there, IT has been a strong momentum play wherein it has supported. The index itself has gained almost 7-8% in last 1 week, I guess. So even pharma, FMCG, they have contributed. तो निफ्टी हैज बीन रेजिलिएंट। तो 24,450 के ऊपर जब तक है, बाय एंड डिक्लाइन स्टैंड शुड कंटिन्यू इन निफ्टी, ऊपर में नॉर्थवर्ड्स ऑफ 24,900 एंड 25,000। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, फॉर चेंज बैंक निफ्टी हैज मैनेज टू होल्ड ऑन टू इट्स गेम। हम लास्ट 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि गैप अप होता है, बट थोड़ा सा ऊपर से वापस प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, बट अब अपना एक इनर स्विंग हाई उन्हें क्रॉस किया है 50,850, जो काफी टाइम से वो नहीं ट्रेड कर पा रहा था, आज ऊपर उसके ऊपर ट्रेड करके कंफर्टेबली मैनेजिंग टू होल्ड इट्स गेम फ्रॉम द ओपनिंग टिक इटसेल्फ। तो अगर यही क्लोज आती है 50,850 के ऊपर, तो स्लोली बट स्टेडीली वापस 51,500 एंड 51,800 के लेवल्स देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। कंपैरेटिवली थोड़ा सा लगाड़ है, बट आज स्ट्रॉन्ग मूव दिया है एंड मेनली लेड बाय प्राइवेट सेक्टर मेजर्स लाइक HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक, एंड PSU में SBI ने कंट्रीब्यूट किया है, बट मेनली ये 4 बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर है, they have managed the index to surpass the swing high of 50,850 and अभी 50,900 चल रहा है। तो ये क्लोज आता है यहीं पे या इसके ऊपर, तो 51,500, 51,800 गोइंग फॉरवर्ड यू कैन एक्सपेक्ट ऑन बैंक निफ्टी। आज इसकी एक्सपायरी है विच इज फिन निफ्टी, तो उसकी बात करें वो भी स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है, और उसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है इसमें बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का भी वेटेज है। तो इवन दोस 2 स्टॉक्स हैज बीन ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग एंड द इंडेक्स इटसेल्फ हैज मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू इट्स गेन। हार्डली 10-15 पॉइंट्स का भी इंट्राडे डिप आता है तो इट हैज बीन बॉट इनटू। तो एक शार्प सर्च के बाद एक कंसोलिडेटिव मूव आया है नीचे में। द रेंज दैट विल प्ले फॉर द लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड वुड बी नीचे में 23,180 या 190, जो आवली का हायर हाई लो का एक सीक्वेंस है which has been maintaining, तो 23,195 नीचे में एंड ऊपर में 23,260, ये 50-60 पॉइंट्स का रेंज है दैट विल ट्राई टू प्ले फॉर द लास्ट आवर। तो द स्ट्राइक दैट इज ऑन आवर रडार इज फिन निफ्टी का 23,150 का कॉल ऑप्शन। सो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 92.93. So what we can do is we'll try to buy this in a dip wherein we can look to enter near 68 से 74 के बीच में, and we'll keep a stop of 50 and we'll look for a higher target towards 110 and 120. So fin nifty का जो strike है, I've shared the levels which is 23,150 का call option fin nifty का। We try to buy between 68 से 72, keeping a stop of 50 or 55 and look for a target of 110. So these are the levels that we are working with as of now. So the strike I have shared, the levels I have shared, and stop loss and tentative targets I have shared. So we'll try to buy in the dip only. So we'll wait for the dip. We'll not be in a hurry to enter the trade. Buy between 68 to 72 and keeping a stop of 15 points, that is 55 से 54 के बीच।
So that is what the trade setup is. We'll try to buy between the FINNifty का 23,150 का call option है. We'll buy between 68 से 72, keeping 54 as top, 54, 55, and look for 110 on the higher side. So this is our FINNifty की अगर weekly VWAP की अगर बात करें तो 23,000 पे है, and we are comfortably almost 200-230 points higher than the weekly VWAP, so which suggests that positive buy should continue, and buy and decline stance जो हम trade भी वैसे ही setup wise ही play कर रहे हैं, which is buy and decline stance. So we'll wait for the dip and then we'll initiate. अगर trade initiate होता है तो well and good. We'll keep a stop of 54, 55 and look for 100 and 110 on the higher side. So I think in the meantime we can take few queries, Anuj. Sure, sir. Let me just scroll up to the top. Sir, Mazgaon का क्या करे और कितना गिरेगा? Mazgaon, I think one of the broking houses initiated a report with a sell rating on it. So I think that has dampened the sentiment. But अगर weekly की structure की बात करें तो एक immediate support बन रहा है 100 और 4,000 के पास. तो और थोड़ा सा corrective move आ सकता है. But 4,200, 4,150 और 4,000 एक immediate support बन सकता है Mazgaon डॉग पे. सर पीएनबी आज काफी दिन बाद एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप बना है. कल गैप अप हुआ था और आज फॉलो अप बाइंग आई है. तो आई थिंक one can, if you want to buy, can buy with a stop of 114 या 113 and a half and look for 120 and 122 on the higher side. Sir, I want to buy Ola Electric Mobility 500 quantity for 6 months. Can I buy this level? What is your opinion? I think Ola recently listed है, तो I think correct. Price history would be not, मतलब ज़्यादा होगा नहीं. तो I think technically बोलना थोड़ा difficult है. But अगर 100-110 के आसपास आता है तो one can look to get into it. Sir, your view on Oswal? Oswal आफ्टर शार्प रन अप थोड़ा सा कल 2 दिन करेक्टिव मूव आया था, लेकिन नीचे में 73 से वापस एक बाइंग मोमेंटम आया है. तो आई थिंक अगर आपको बाय करना है तो वेट टू बाय बिटवीन 71 to 74. इन करंट मार्केट प्राइस पे मत लीजिए. लुक फॉर 71 to 73 एंड दैट वुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट फॉर Oswal. अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 70 एंड कंटिन्यू टू होल्ड. ऊपर में 85 87 स्लो एंड स्टेडीली आ सकता है. Sir, even small finance. जीवन में आज स्ट्रॉन्ग मूव आया है. 5.5 4-5 जगह ऊपर है. आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, बट वीकली में एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल साइन दिखा रहा है. तो अगर यही क्लोज आता है तो वापस 47-48 के लेवल्स आ सकते हैं. बट थोड़ा सा स्लो एंड नेगेटिव ट्रेंड में है, तो वीकली पे भी लोअर लोज बना रहा है. तो आई थिंक थोड़ा सा रिवर्सल है, वेरिंग थोड़ा बाउंस बैक ट्रेड आ सकता है. 48-49 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं यूजीएन स्मॉल फाइनेंस में. बजाज ऑटो, Bajaj Auto has been consolidating. Sharp run up के बाद consolidate कर रहा है. Weekly scale पे भी देखे तो एक consolidative move है. अगर 10,000 के ऊपर एक strong up move आ सकता है. अगर आपका position है तो keep a stop of 9650 or 9600 and continue to be long. अगर आप position नया लेना चाहते हैं तो it's a good level to get into with 9650 as stop. Sir, your view on Coforge?
IT has last 3-4 दिन में strong रन अप आया है नीचे से 5800 से almost the stock has scaled to 6200, तो 400 पॉइंट का एक अप मूव आया है, तो थोड़ा सा आप एक कंसोलिडेशन मूव में चले जाएगा, बट जब तक 5700 नहीं ब्रेक करता है या 5900 ब्रेक नहीं करता तब तक एक और फॉलो अप बाइंग आ सकते हैं, which can take the stock to 6360 and 6500 on the higher side. So continue to be long in cohorts with a stop of 5900. Sir, your bid on the trade? The trade is जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेशन 91 92 था ऑप्शन हमारा, एंड अभी भी 92 94 है, तो खाली 2 पॉइंट्स का मूव आया है विद इन 10 मिनट्स दैट वी स्टार्टेड द सेशन. So I think we'll wait for our price. अगर कुछ चेंज होगा तो I'll definitely intervene and get into it. But सुबह से जो एक at 11 and 15 जो एक strong move आया ना, उसके बाद एक consolidative move mode में चले गए हैं, wherein the option premium itself has been trading in a 15 point band. तो 15 point के move में from the last one and a half hour, the low of the option that we are tracking is 60 and high is 90. So 15-20 points के range में है, so we'll wait to buy in the dip only. We will not be too aggressive and buy at a current market price, but we'll wait for a dip. अगर कुछ change होता है, we'll definitely update for the same. Sir, BDL bought at 1614 400 quantity. 1614. 1614. Okay. Oh. BDL, just like Mazgao Dog, I think defense and HAL, your railways, they have been underperforming. तो थोड़ा सा एक lackluster move है, and ऊपर से profit taking देखी गई है. Sharp run up के बाद थोड़ा सा consolidate कर रहा था, लेकिन और follow buying नहीं आ रही है. तो नीचे में एक strong support है 1200 का. अगर 1200 break करता है तो I think it can retrace to 1100 or 1150 or 1050 also. तो जब तक 1200 होल्ड कर रहे हैं, यू कंटिन्यू टू बी लॉन्ग. अगर आपका लेवल इज वेरी हाई, बट 1420 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेड आ सकता है, तो जब तक 1200 ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक कंटिन्यू टू बी लॉन्ग, एंड ऊपर में 1420 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा. Ircon 2500 quantity at 334. सेम जैसे मैं अभी बोले कि शिप बिल्डिंग जो है, जैसे कि HAL, गार्डन रिच एंड मजगांव डॉक, ये तीन, फिर इरकॉन, RVNL, IRFC, जो PSU स्टॉक्स जो जितने शार्प रनअप हुए थे, बी इट इवन IRED है जो ऑलमोस्ट 300 से 240 हो गया है, तो एक थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया डेफिनेटली इन ऑल दी स्टॉक्स. तो थोड़ा सा आई थिंक वेट एंड वॉच कीजिए. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अगर 1-2 इयर्स का आपका टाइम होराइजन है, देन आई डोंट थिंक यू शुड नीड टू वरी. बट अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो यू हैव टू मेंटेन अ स्टॉप. अदरवाइज क्या है कि इतना कोई भी स्टॉक 50-60 वाला 300 हो गया है, तो अगर 100-150 पॉइंट गिर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो यू डोंट नीड टू बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट. सो अगर ट्रेडिंग है तो काइंडली मेंटेन स्टॉप लॉस एंड ट्रेड. अगर 2-3 साल का आपका टाइम होराइजन है तो डोंट वरी, आई थिंक यू विल सी मच हाई लेवल्स ऑन इरकॉन, बी इट इरकॉन, RVNL, मजगांव डॉक, और GRSE, HAL, BEL, BDL, BEML. Sir, Dish TV bought at 17.88. आई थिंक वीक काउंटर है, कोई ऐसा मेजर वो स्ट्रेंथ नहीं है. आपने आपका प्राइस ही काफी हाई एंड पे आपने ले लिया है, तो आई थिंक नीचे में 14 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. आई डोंट थिंक मेजर कोई ऐसा मूव आएगा दैट, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग चार्ट पे भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक 14 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. आई डोंट सी एनी मेजर मूव इन डिश टीवी. मीडिया एज अ सेक्टर हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, तो आई थिंक लास्ट अगर एक साल का डेटा भी देखे तो दैट वुड बी द ओनली सेक्टर दैट वुड हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो बेटर टू अवॉइड. अगर नहीं है तो डोंट गेट इनटू डिश टीवी. अगर है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 14. Sir, SBIN 830 call bought at 930. At 9 9.30.
क्या स्ट्राइक है ऑप्शन का? 830 कॉल. ओके. What is the buying price? I'm sorry, I'm asking again. 9.30. 9.3. Okay. So I think SBI continue to hold, keep a stop of 5 and hold the option. ऊपर में look for 20, 18 to 20 rupee. So do we have any other strikes in which we can trade, or are we going to wait for this? I think, as I said, when he started the session, the option was quoting at 92. Now it is 96. तो 4 रुपए में क्या ही ट्रेड लेंगे और क्या ही एग्जिट करेंगे. तो we'll wait. I think अगर डिप आता है तो अगर चेंज होता है, अगर हम towards the end of the session if we think that हमारा लेवल नहीं आएगा तो just like in previous sessions we have changed our buying price. We have even given at CMP if we are so aggressive. But ऐसा कोई मूव है ही नहीं. हमने जब स्टार्ट किया 92 तो अभी 97 है. तो 5-6 रुपए में क्या ही आपका कोई ट्रेड सेटअप है ही नहीं. तो So I would like to take this chance to share something. Okay. Thanks a lot, Raju Kumar Pandey for mentioning this. There are people in the ecosystem, not Motilal Oswal ecosystem, overall stock market ecosystem, who are using Motilal Oswal's name for fake transactions, fake commitments, giving wrong calls, scamming people for money, using Motilal Oswal's name, Chandan sir's name, research team's name. And there are fake channels, so please beware of them. Don't fall for it. They have fake employee codes, fake IDs, and everything. Whenever you get these sort of requests, vet with your RM assigned to you. RM is relationship manager assigned to you. Please don't fall for all these scams. Yeah, I think that's a good message. I think काफी scams बढ़ गए of late. So please verify with the RMs, as Anuj rightly said. Correct. Jaisa ki he has shared a screenshot that Ramdev Agarwal, head of Institute Executive Motilal Oswal, has set up a good stock exchange group. Join this for study material worth 1 lakh. You are never going to get a message like this from Motilal Oswal, especially with a country code number plus 880. So never fall for these kind of messages and confirm everything with Motilal Oswal. And to confirm everything, you can drop a mail to query@motilaloswal.com. Yes. I guess our strike is back to 91. 92 है. So I think whatever जहाँ से हमने start किया था तभी से ही वहीं पे है. तो there's no point rushing and buying something. I don't think it is worth buying at CMP. Sir, what is the BTST for today? BTST, I think we are tracking, but I'll try to get something. At least we'll get some trade. Sir, Anuras buy at 790. Anuras. Yeah. Just a moment. Anuras again थोड़ा सा structurally weak ही है, but नीचे से अच्छी buying आई है. तो अगर 820 के ऊपर fresh breakout है, अगर 820 निकल जाता है तो एक strong move आ सकता है अनुरस में. अगर आपका पोजीशन है तो keep a stop of 780 and 785 and look for ऊपर में 840, 850. 820 के ऊपर एक strong breakout आ सकता है स्टॉक में. Sir, Apollo Tyres bought at 557. 557, almost near the highest point. वहाँ से एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया है, लेकिन जो ब्रेकआउट जोन था उसका रीटेस्ट हुआ है. तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्राइस टू बाय. अगर आपका ट्रेड सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है, तो आई थिंक अगर आपको नया फ्रेश पोजीशन भी लेना है तो अपोलो टायर्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है. आफ्टर ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हुआ है और जो प्रीवियस ब्रेकआउट था उसको रीटेस्ट किया है. तो विद अ सपोर्ट ऑफ 475 ऊपर में 520, 540 आ सकता है अपोलो टायर्स. आई थिंक अगर आपका पोजीशन है तो कंटिन्यू टू बी लॉन्ग. अगर नहीं है तो those who want to enter into a fresh trade, keep a support of 475 and look for 525 and 535 on the high side in Apollo Tyres.
even this can also be a good BTST candidate also. So I think अगर BTST किसी को करना है तो keep a support of 490 and look for 510, 515 on the higher side. Apollo Tyres. And again, I guess हमारा option पे वापस आते हैं तो when we started the session, FINNifty was 23,230 and right now it is 27,233. So the index itself has been caught in a tight band. So I think the option to uska underlying derivative hai. So I think it would be difficult, but let's see. We have 3-4 minutes in it. अगर So कुछ meanwhile, रहता है, you can share the BTST. sorry. Meanwhile, हम wait कर रहे हैं तो you can share the BTST. Yeah, BT. I think Apollo Tyres should be a good BTST candidate. I think 490 के stop से look for 510 or 515 on the high side. Apollo Tyres is a good BTST candidate. तो BTST जो करते हैं उनको 490 के stop से Apollo Tyres strong candidate है. Breakout को retest किया है तो I think it should work well. And what will be the target, sir? 510 and 515. 510 and 515. Yes. Usually we have a trade, but we are not sure if that will be initiated or not. It's trading at 87 right now, and our buying price is 72. So we still have a lot of ways to go. Yeah. Let's see. So, but we have shared the BTST and BTST. Even one more stock that is Samadhan Motherson, if I can check the chart. I think weekly maybe एक narrow band में है, तो I think above 190 एक strong move आ सकता है. I think Samadhan Motherson is also a good BTST candidate. I think days high पे trade कर रहा है, नीचे से strong recovery आई है. तो keeping a stop of 183, you can look for 195 and 197 on the high side. Samadhan Motherson. I think even that is a good BTST trade. Weekly में narrow है NR which is narrow range. तो लास्ट वीक का डोजी है तो आई थिंक 190 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है इन संवर्धन मदरसन. So even संवर्धन मदरसन one can do a BTST 184, 183, 184 के स्टॉप से look for 192 and 195. I guess it is back to the price जब हमने session start किया था 93. So I guess we have no trade for the day. नीचे में 83 आया था मैक्स. सो आई थिंक 10 पॉइंट के रेंज में हम कहाँ बाय करेंगे, कहाँ सेल करेंगे. तो रेंज हो गया है. आई थिंक जो 11 एक स्ट्रॉन्ग 11-15 को स्ट्रॉन्ग मूव आया था, उसके बाद देखेंगे तो एक कंसोलिडेटिव मूव में ही चले गए हैं. तो क्या ट्रेड सेटअप बनेगा उसमें. So I guess that is all for today. We have no trade for the day. We have initiated a BTST. Ruchiji Singh correct, sir. No trade is also good choice when it's in tight range. That's why we played very smart, very patiently. We wait for our buying price to trigger. Yeah, I think because ये index का ATR is very less. So I think 0.8, 0.9 is the ATR. So the index is already up by how much? 1.3%. So it is difficult as a strong move आना, which is why we wanted to buy it in a dip. So at least a margin of safety रहेगा और हमारा stop loss भी risk reward 1:2, 2.5 बन सकता है. So which is why we wanted to buy in a dip, but dip आ नहीं रहा है. तो we don't want to be aggressive. ऐसा नहीं है कि when we started and it was quoting at 90 and then it has reached to 120 or 140. So it is where it is. तो अगर देते भी तो भी वही होता. तो better to protect capital for a better day than just risking it for the sake of taking a trade. So, well said, sir. So that will be all, guys. Thanks a lot for joining in. We have shared the BTST and we did try to take up as many as all questions possible. We'll take up more for tomorrow in the morning session at 9:30 a.m. Please note for the next 3 days, Wednesday, Thursday, Friday, we have 3 sessions every day. You can check out Stockmove for more details. That will be all. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much.